What is an injunction? Types. Who can get an injunction? Circumstances can an injunction. Injunction order introduction. Injunction order. People use the word injunction when dangerous and excessive actions are taking place. People know it by other names such as injunction order and injunction. I am giving this detailed explanation especially for your understanding. That is, the law called injunction order can be called injunction, but in our practice we call it by many names such as injunction order, stay order, etc. But in fact, it is correct to say injunction in legal practice. What is the procedure for which an injunction order is used? An injunction order is an order issued against a particular person or a party, stating that certain actions should not be done or should be done by that person or that party. Asterisk types of injunctions asterisk. What is an injunction order? Please understand that I am referring to an injunction here. 1. Interim injunction or temporary injunction. 2. Mandatory injunction. 3. Perpetual injunction. 4. Prohibitory injunction. There are 4 types of injunctions in force. What is an interim injunction? An order issued by the court until further notice is called an interim injunction. What is an injunction? An order issued by the court to do something is called an injunction. What is a permanent injunction? It is a permanent prohibition against someone from doing something. A permanent injunction is a decree issued by a court, which ultimately dismisses the injunction case. What is an injunction? An injunction is an order by a court that a person should not do something. Asterisk who can get an injunction? Asterisk. To get an injunction, a case filed by the person or by someone else against him must be pending in court. Under what circumstances can an injunction not be obtained? An injunction called an injunction cannot be obtained if the case has not been filed or the case has been concluded. A court cannot issue an injunction in a case where it does not have the authority to issue an injunction. An injunction cannot be obtained in a case related to division of labor. An injunction cannot be obtained against an action taken by an administration against its employee. An injunction cannot be obtained when a case is not filed in court properly. An injunction becomes effective from the time it is served on the opposing party. If a restraining order has been issued in a case, the restraining order will end once the case is concluded. A case is pending in court. If the case is dismissed due to the failure of the party to appear in the case, the restraining order obtained will also be dismissed. If the case is taken up again, the restraining order will not be automatically taken up in the case. Violating a restraining order is a punishable offense. Only the party to whom the restraining order is issued can appeal to the court against the other party's violation of the restraining order. உத்தரவு என்றால் என்ன? வகைகள். யார் தடை உத்தரவை பெறலாம்? சூழ்நிலைகள் ஒரு தடையானே. தடை உத்தரவு அறிமுகம். தடை உத்தரவு ஆபத்தான மற்றும் அதீத செயல்கள் நடக்கும்போது மக்கள் தடை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றனர். தடை உத்தரவு மற்றும் தடை உத்தரவு போன்ற பிற பெயர்களால் மக்கள் அதை அறிவார்கள். குறிப்பாக உங்கள் புரிதலுக்காக இந்த விரிவான விளக்கத்தை தருகிறேன். அதாவது தடை உத்தரவு எனப்படும் சட்டத்தை தமிழில் தடை உத்தரவு என்று கூறலாம். ஆனால் நமது நடைமுறையில் தடை உத்தரவு, ஸ்டே ஆர்டர் என்று பல பெயர்களில் அழைக்கிறோம்.
ஆனால் உண்மையில் சட்ட நடைமுறையில் தடை உத்தரவு என்று சொல்வதுதான் சரி. தடை உத்தரவு பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறை என்ன? தடை உத்தரவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது ஒரு தரப்பினருக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு. சில செயல்களை அந்த நபர் அல்லது அந்த தரப்பினரால் செய்யக்கூடாது அல்லது செய்யக்கூடாது என்று குறிப்பிடுகிறது. தடைகளின் வகைகள். எண்ணாறு தடை உத்தரவு. தயவு செய்து நான் இங்கே ஒரு தடை உத்தரவை குறிப்பிடுகிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளவும். 1. இடைக்கால தடை அல்லது தற்காலிக தடை. 2. கட்டாய தடை உத்தரவு. 3. நிரந்தர தடை உத்தரவு. 4. தடை உத்தரவு. 4 வகையான தடை உத்தரவுகள் நடைமுறையில் உள்ளன. இடைக்கால தடை உத்தரவு என்றால் என்ன? மறு அறிவிப்பு வரும் வரை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவு இடைக்கால தடை எனப்படும். தடை உத்தரவு என்றால் என்ன? ஏதாவது செய்ய நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவு தடை உத்தரவு எனப்படும். நிரந்தர உத்தரவு என்றால் என்ன? ஒருவர் எதையாவது செய்யக்கூடாது என்ற நிரந்தர தடை இது. நிரந்தர தடை உத்தரவு என்பது நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட ஒரு ஆணையாகும். இது இறுதியில் தடை வழக்கை தள்ளுபடி செய்கிறது. தடை உத்தரவு என்றால் என்ன? தடை உத்தரவு என்பது ஒரு நபர் ஏதாவது செய்யக்கூடாது என்று நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு. யார் தடை உத்தரவு பெறலாம்? தடை உத்தரவை பெற நபர் அல்லது அவருக்கு எதிராக வேறு யாரோ தாக்கல் செய்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்க வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையில் தடை உத்தரவு பெற முடியாது? வழக்கு பதிவு செய்யப்படாவிட்டாலோ அல்லது வழக்கு முடிக்கப்பட்டாலோ தடை உத்தரவு எனப்படும் தடை உத்தரவை பெற முடியாது. நீதிமன்றத்தால் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்க அதிகாரம் இல்லாத வழக்கில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது. தொழிலாளர் பிரிவு தொடர்பான வழக்கில் தடை உத்தரவு பெற முடியாது. ஒரு நிர்வாகம் தனது ஊழியர் மீது எடுக்கும் நடவடிக்கைக்கு எதிராக தடை உத்தரவு பெற முடியாது. நீதிமன்றத்தில் முறையாக வழக்கு தாக்கல் செய்யாத போது தடை உத்தரவு பெற முடியாது. ஒரு தடை உத்தரவு எதிர்த்தரப்புக்கு வழங்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே நடைமுறைக்கு வரும். ஒரு வழக்கில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் வழக்கு முடிந்ததும் தடை உத்தரவு முடிவுக்கு வரும். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. வழக்கில் ஆஜராகாததால் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் பெறப்பட்ட தடை உத்தரவும் தள்ளுபடி செய்யப்படும். மீண்டும் வழக்கு தொடரப்பட்டால் அந்த வழக்கில் தடை உத்தரவு தானாக எடுக்கப்படாது. தடை உத்தரவை மீறுவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மட்டுமே மற்ற தரப்பினரின் தடை உத்தரவை மீறுவதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடியும். निषेधाज्ञा क्या है? प्रकार निषेधाज्ञा किसे मिल सकती है? निषेधाज्ञा किन परिस्थितियों में हो सकती है? निषेधाज्ञा आदेश परिचय। निषेधाज्ञा आदेश जब खतरनाक और अत्यधिक कार्य हो रहे हों तो लोग निषेधाज्ञा शब्द का उपयोग करते हैं। लोग इसे निषेधाज्ञा आदेश और निषेधाज्ञा जैसे अन्य नामों से जानते हैं। मैं यह विस्तृत विवरण विशेष रूप से आपकी समझ के लिए दे रहा हूं। अर्थात निषेधाज्ञा आदेश नामक कानून को तमिल में निषेधाज्ञा कहा जा सकता है, लेकिन हमारे व्यवहार में हम इसे निषेधाज्ञा आदेश, स्थगन आदेश आदि जैसे कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में कानूनी व्यवहार में निषेधाज्ञा कहना ही सही है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके लिए निषेधाज्ञा आदेश का उपयोग किया जाता है? निषेधाज्ञा आदेश किसी विशेष व्यक्ति या पक्ष के विरुद्ध जारी किया गया आदेश होता है, जिसमें कहा जाता है कि उस व्यक्ति या पक्ष द्वारा कुछ कार्य नहीं किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए।
निषेधाज्ञा के प्रकार। निषेधाज्ञा आदेश क्या है? कृपया समझें कि मैं यहां निषेधाज्ञा की बात कर रहा हूं। 1. अंतरिम निषेधाज्ञा या अस्थायी निषेधाज्ञा। 2. अनिवार्य निषेधाज्ञा। 3. स्थायी निषेधाज्ञा। 4. निषेधात्मक निषेधाज्ञा। 4 प्रकार की निषेधाज्ञाएं लागू होती हैं। अंतरिम निषेधाज्ञा क्या है? अगली सूचना तक न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश को अंतरिम निषेधाज्ञा कहा जाता है। निषेधाज्ञा क्या है? न्यायालय द्वारा कुछ करने के लिए जारी किए गए आदेश को निषेधाज्ञा कहा जाता है। स्थायी निषेधाज्ञा क्या है? यह किसी व्यक्ति को कुछ करने से स्थायी रूप से रोकता है। स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश होता है जो अंततः निषेधाज्ञा मामले को खारिज कर देता है। निषेधाज्ञा क्या है? निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए। निषेधाज्ञा किसे मिल सकती है? निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या उसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किया गया मामला न्यायालय में लंबित होना चाहिए। किस परिस्थिति में निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती? यदि मामला दायर नहीं किया गया है या मामला समाप्त हो गया है तो निषेधाज्ञा नामक निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती। न्यायालय ऐसे मामले में निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता जहां उसके पास निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार नहीं है। श्रम विभाजन से संबंधित मामले में निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती। जब मामला न्यायालय में उचित तरीके से दायर नहीं किया जाता तो निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती। निषेधाज्ञा उस समय से प्रभावी हो जाती है जब इसे विरोधी पक्ष को दिया जाता है। यदि किसी मामले में निरोधक आदेश जारी किया गया है तो निरोधक आदेश मामले के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा। न्यायालय में मामला लंबित है। यदि मामले में पक्षकार के उपस्थित न होने के कारण मामला खारिज कर दिया जाता है तो प्राप्त निरोधक आदेश भी खारिज कर दिया जाएगा। यदि मामले को फिर से उठाया जाता है तो निरोधक आदेश स्वतः ही मामले में नहीं लिया जाएगा। निरोधक आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। केवल वह पक्षकार जिसके लिए निरोधक आदेश जारी किया गया है वह दूसरे पक्ष द्वारा निरोधक आदेश के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है।